प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परान ट्रांसपरेशन। रात परनाए में ट्रांसपरेशन क्या गो तो ट्रांसपरेशन कस टाइप तथ वो सह ट्रांसपरेशन गोडनुक टाइप दैट इज cytometal ट्रांसपरेशन दैट constitutes maximum water loss यम कि वारिया ज़्यादा वाटर लॉस गसान इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स यह ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ is a transverse section of a typical dicot leaf यह मज तुम लीफस मज अंदर कनत different cell layers that is outside you have a cuticle and but upper epidermis. Then you have a mesophyll tissue that is made up of palisade parenchyma and spongy parenchyma, and at the center of the leaf yet midrib midvein that consists of xylem and phloem, that is vascular tissue surrounded by starch sheath, and bunmi side lower epidermis that also possess cuticle. In case of dicot leaf stomata are usually located on lower epidermis of leaf. तवे बदमि साइड stomatal pores बदमि साइड small specialized microscopic pores वन stomata यमो किन transpiration as well as exchange of gas गसान यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अचान या ऑक्सीजन नबर नेरान अगर तुम ये वो during transpiration what happens यु लीफस पे सन रेडिएशंस पेवान अत आब it gets converted into vapors. That's why leafs अंदर कन high water vapor content and nebr in the atmosphere मज low water vapor content अत बनो a gradient arc between interior and exterior of the leaf. इतना पे अगर तुम वो दशनी साइड inside the leaf you have low carbon dioxide concentration, and outside the leaf in the atmosphere you have high carbon dioxide concentration. Be banu at concentration gradient, the carbon dioxide thaw from exterior into interior of the leaf through these stomatal pores. Itha put ab neran from interior to exterior of the leaf through these stomatal pores, and this type of transpiration constitutes maximum water loss in plants. इस बन रूटो किन आब खसान पे बी लॉस गसान थ्रू ट्रांसपरेशन तेल क्या वजह यह प्लांट आब बन खालान हेर लॉस्ट करान यह कौन तुत आब खालान यूत अमिस जरूरत पेवान यह क्या यह वाटर करान लॉस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन अत पकि क्या बैकग्राउंड अत पकि क्या सिग्निफिकेंस यह करो आन जान कोशिश तवे क्या लिखान ट्रांसपरेशन इज अ नेसेसरी एवल नसा कह बल्कि अत फत कन मुदा तो मकसद अल्लाह ताला कायनात मज कहूँ ति चीज़ बेफायद बनोमुत नफा वराय बनोमुत लिहाजा प्लांट यम हसा इंसान खतर यम बेसिक नीड्स फुलफिल करान all the 4 basic needs of life are fulfilled by plants. यम प्लांट मज ट्रांसपरेशन गसान इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस गसान यह कत पे हे बेफायद यह कत पे हे नफा वराय हाउ इट इज़ पॉसिबल मगर यह जान कोशिश कि वो अत नतीजस पे कह या यम यह वो नेसेसरी एवल सो हेक अत नतीजस वो कह कि अत पकि क्या बैकग्राउंड अत पकि क्या रब सुन कुदरत कि यम सात यह लीफ ट्रांसपरेशन करान तो पत वोनुक ड्यूरिंग यम सात यह आब खाल प्रोसेस गसान प्लांट्स मज यह आब कत पे रूट पे टॉप ऑफ द ट्री वातान वोनुक यह बिकॉज ऑफ ट्रांसपरेशन वातान अगर हसा हेर पुल क्रिएट गि तेल हेक यह
हाइट पे आब खसित कह. It is because of transpiration that act as a pull so as to elevate the water from base to top of the tree up to the larger heights up to the uh, larger heights in case of tall trees. यह खास वजह. लिहाजा इस ट्रांसपरेशन अत क्या सिग्निफिकेंस पत किन यह करो इंशाल्लाह आज जान कोशिश. अत पत किन कम कम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स यह करो इंशाल्लाह जान कोशिश. That is significance of transpiration. Paro as this question. The various advantages of transpiration are as first, that is quicker absorption of water. Transpiration results in the development of transpiration pool in the xylem duct, which is transmitted up to the roots, causing quicker absorption of water. Tell the bush transpiration से चेहर कन पुल create गसान युस बन आब लमान from the base of the root or from the base of the tree. Along this absorption of water, there is also absorption of minerals. Along with the quicker absorption of water to transpiration, there also occurs quicker absorption of minerals. And third, transpiration causes ascent of sap. Sap means water plus minerals, which results in the distribution of minerals to various parts of plants. Then fourth one is transpiration. It regulates the temperature. That's called as cooling effect. It's during sunny days, hot temperature temperature ज़्यादा plants absorb large quantity of radiant energy, which increase their temperature. However, transpiration involves evaporation of water, which has a cooling effect and so regulates temperature of plants. That's why transpiration has an important component by regulating the temperature in and outside the plant body. That's another function of transpiration is the excessive transpiration causes accumulation of sugars in the cells of fruits, thus improves their quality and taste. Then development of mechanical tissue. Excessive transpiration causes walls of cells to become thick, which results in the development of mechanical tissue. It has been observed that plants absorb more water than it requires. This excess water is lost in transpiration. And transpiration provides a stimulus for proper development of roots. And here हेर pull create गसान तम पुल सह बन यम रूट तम ज़ेठान रूट हेयर नई नई बनान so as to absorb more and more water from the soil by increasing their surface area. यानी हसा हेर जरूरत पेवान तेले बन रूट डेवलप गसान. अगर नसा ट्रांसपरेशन गसा कहें तो यह खाली आब तम रूट गसान डेवलप कम तो अमिच बेस रोजान कमजोर. That's why development of root गसान because of transpiration. गो यम significance aspects of transpiration यम सन कुलिस overall सरसी फायदे वातान. And all the four basic needs of life fulfill गसान, that is food, fodder, shelter as well as oxygen. These are four basic needs of life. They are again fulfilled by plants. And transpiration is आसान overall सरसी plants फायदे वातनावान. तो प्लांट रोज तेले खड़ा ये एब्जॉर्ब कर वाटर. ये वाटर गज एब्जॉर्ब तेले गज फोटोसिंथेसिस तेले नेर ऑक्सीजन तेले गज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स तेले बन शुगर्स तेले बन फूड तेले बन फ्रूट्स तेले बन फाइबर्स तेले बन शेल्टर तेले बन वुड ये सारी. दैट मीन्स तेल दपोस ओवरऑल जो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सह बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन
That's why transpiration is an important process that regulates the whole development of plants. Inshallah چھُ مےٚ اُمید تۄہہِ آسہِ سمجھ آمُت. بیٚیہِ خۄدایَس حوالہٕ دِ اِجازت. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.